Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Mazhar. Today I am going to deliver my lecture on the topic water scarcity in Pakistan. Before going to start this lesson in detail, let me tell you about the objectives that you are supposed to attain at the completion of this lesson. First of all, you should be able to make MCQs. Then you should be able to do translation of the same text. Third, we have to know about the grammatical structures which have been used inside the sentences of the text. Then we have comprehension, I mean to say short questions. And in the last, the main objective of this lesson, that water should be used carefully. Okay, now let's take a start from translation. First of all, we have Pakistan is a land gifted. Pakistan एक ऐसी क्या है? ज़मीन है, एक ऐसा मुल्क है गिफ्टेड जिसको नवाजा गया है. गिफ्टेड मीन्स नवाजना. गिफ्टेड मीन्स नवाजना, जिसको नवाजा गया है. पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसको नवाजा गया है विद लेविश. लेविश मीन्स बहुत ज़्यादा, कसरत से. यानी पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मीन्स वसाइल. रिसोर्सेज मीन्स वसाइल ऑफ वाटर, पानी का. यानी पाकिस्तान एक ऐसी ज़मीन है जिसको बहुत ज़्यादा पानी के वसाइल से नवाजा गया है. गिफ्टेड मीन्स नवाजना. इट इज़ अ लैंड, ये एक ऐसी ज़मीन है वेयर, जहाँ पे क्रिस्टलीन ग्लेशियर. क्रिस्टलीन मीन्स साफ शफाफ. क्रिस्टलीन मीन्स साफ शफाफ. ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन्स बर्फानी तोदों का. यानी वो पानी जो बर्फानी तोदे से आता है उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर. वाटर रोल्स डाउन. रोल्स डाउन मीन्स बहना. द माइटी, माइटी मीन्स अजीम, बड़ा. हिमालय एंड कराकोरम. हिमालय और कराकोरम. तो फिर शुरू से फिर से पढ़ते. पाकिस्तान इज द लैंड. पाकिस्तान एक ऐसी ज़मीन है गिफ्टेड विद लेविश रिसोर्सेज ऑफ वाटर, जिसको बहुत ज़्यादा पानी के वसाइल से नवाजा गया है. यानी पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसको पानी के बहुत ज़्यादा वसाइल से नवाजा गया है. इट इज़ अ लैंड, ये एक ऐसी सरजमीन है वेयर, जहाँ पे क्रिस्टलीन ग्लेशियर वाटर, जहाँ पे साफ शफाफ बर्फानी तोदों का जो पानी है, रोल्स डाउन, वो बहता है. द माइटी हिमालयाज, माइटी अजीम हिमालय से वो बहता है. एंड कराकोरम, और कराकोरम की क्या? पीक्स. पीक्स मीन्स चोटियों से. पीक्स मीन्स चोटियाँ. यानी ये जो पानी है, जो साफ शफाफ बर्फानी तोदों का जो पानी है, ये हिमालय और कराकोरम के जो अजीम चोटियाँ हैं उनसे बहता है. कहाँ पे बहता है? टू द फर्टाइल, जो जरहेज. फर्टाइल मीन्स जरहेज. जो फर्टाइल क्या है? प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स मैदान. जो जरहेज मैदान है उसमें ये पानी जो है बहता है. लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये हिमालय और कराकोरम की चोटी से इसकी शुरुआत होती है. उधर से फिर नीचे बहता है, और नीचे कहाँ पे आता है? जो जरहेज मैदान है उधर तक ही आता है. एंड ब्रेक इनटू इंट्रिकेट वेब, और फिर ये पानी जो है क्या होता है? तकसीम हो जाते हैं. ब्रेक इनटू मीन्स तकसीम होना. इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब क्या है? पेचीदा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिकेट? इंट्रिकेट मीन्स पेचीदा. यानी फिर जब ये पानी उधर से नीचे आता है, कराकोरम और क्या हिमालय के जो चोटी है उनका जो पानी है जब नीचे आता है मैदानों में, तो फिर ये जो है इस जरहेज मैदानों से होते हुए फिर ये तकसीम हो जाता है. ब्रेक इनटू मीन्स तकसीम होना, और इंट्रिकेट मीन्स पेचीदा. वेब, वेब मीन्स जाल. वेब मीन्स जाल ऑफ कैनाल सिस्टम. कैनाल मीन्स, कैनाल किस चीज को कहते हैं? नहर को कहते हैं. कैनाल सिस्टम मीन्स नहरी निज़ाम. सिस्टम मीन्स निज़ाम, कैनाल मीन्स नहरी. इन्हीं नहरों का जो निज़ाम है, फिर ये पानी नीचे आ जाता है, हिमालय कराकोरम से नीचे आते हुए जरहेज मैदानों में पहुंच जाता है, और फिर उस मैदानों में तकसीम होके उससे होते हुए फिर कहा हो जाता है, ये फिर पेचीदा जो जाल है, जो नहरी निज़ाम का एक जाल है, उसमें ये तकसीम हो जाता है. दैट एरिगेट्स, अब ये जो पानी है जो कैनाल नहरों
के निज़ाम में तकसीम हो गया, ये जो पेचीदा निज़ाम है, फिर ये पानी क्या करता है, दैट एरीगेट्स, एरीगेट्स मीन्स सैराब करना, एरीगेट्स का मतलब क्या है, सैराब करना। फिर ये पानी जो है ये सैराब करता है ओवर 60 मिलियन हेक्टर्स, यानी 16 मिलियन हेक्टर जो है ऑफ लैंड, ज़मीन का, यानी 16 मिलियन हेक्टर जो है ज़मीन का ये सैराब करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। 16 मिलियन हेक्टर्स, ये बहुत ज़रूरी है MCQs के लिहाज से कि कितना, मतलब ये कितनी ज़मीन सैराब करता है, 16 मिलियन हेक्टर ज़मीन जो है इसको वो सैराब करते हैं, ऑफ लैंड, ज़मीन का। कौन सा ज़मीन, अवेलेबल, जो दस्तयाब है। तो कहाँ से शुरुआत हुई, यानी पाकिस्तान जो है उसको क्या किया, अल्लाह ने नवाजा है, किस चीज़ से, बहुत ज़्यादा पानी के वसाइल से नवाजा है। अब ये पानी जो है ये साफ़ शफाफ पानी जो बर्फ़ानी तोदों का पानी है, ये हिमालय और कराकोरम की क्या चोटियों से बहता हुआ ये नीचे आता है ज़रहेज़ मैदानों में, और फिर इस ज़रहेज़ मैदानों में ये तकसीम हो के मुख्तलिफ जो नहरी निज़ाम है उसमें तकसीम हो जाता है। और फिर ये क्या करता है, जब ये तकसीम हो जाते हैं नहरी निज़ाम में, तो ये 16 मिलियन हेक्टर जो ज़मीन है, जो दस्तयाब ज़मीन है, उसको ये एरीगेट सैराब करता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। द अदर सोर्सेज, जो दूसरे वसाइल है, ज़राए है, सोर्सेज में ज़राए ऑफ वाटर, पानी के जो दूसरे ज़राए है, अवेलेबल, जो क्या है, दस्तयाब है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, आर रेनफॉल, वो क्या है, वो बारिश का पानी है। यानी बारिश जो है वो भी क्या है, एक ज़रिया है, किस चीज़ का, पानी का। यानी इस कराकोरम और हिमालय से जो पानी आता है, इन चोटियों से जो पानी आता है, इसके अलावा भी और वसाइल है और ज़राए है पाकिस्तान में पानी के। सबसे पहले क्या है, द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, जो दूसरे पानी के ज़राए है या वसाइल है, अवेलेबल, जो दस्तयाब है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, और रेनफॉल, वो बारिश है, यानी बारिश का पानी भी एक क्या है, एक वसीला है, एक ज़रिया है पानी का। सरफेस वाटर, जो सतही, सरफेस में सतह, यानी जो सतही पानी है, जो सतह के ऊपर होता है, अवेलेबल, जो दस्तयाब है, वो भी एक ज़रिया है। इन रिवर्स, वो कहाँ पे होता है, सतह का जो पानी होता है वो दरियाओं में होता है, यानी दरियाओं का जो पानी है, जो सतही पानी है, वो भी एक ज़रिया है। तो बारिश हो गया, और क्या दूसरा, सतही पानी जो दरियाओं में होता है, वो भी एक ज़रिया है पाकिस्तान में पानी का। एंड अंडरग्राउंड वाटर, और जो क्या है, ज़ेर ज़मीन जो पानी है, जो ज़मीन के अंदर है, अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के अंदर या ज़ेर ज़मीन जो पानी है, वो भी क्या है, एक ज़रिया है, किस चीज़ का, वो है पानी का एक ज़रिया है। इन सरफेस वाटर, जो सतही पानी है, जो ज़मीन के ऊपर जो सतह पे जो पानी है, वी हैव 3 रिवर ड्रेनेज बेसन्स, यानी इस सतही पानी का हमारे पास 3 जो है दरियाई निकास का क्या है, बेसन्स है। बेसन को उर्दू में क्या कहते हैं, तास। बेसन वैसे छोटे तालाब को भी कहते हैं, बेसन छोटे तालाब को भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, यानी ये जो सतह पे जो पानी, सतह के ऊपर की जो पानी है, जिसको आप सतही पानी कहते हैं, ये क्या है, वी हैव 3 रिवर ड्रेनेज बेसन। फिर इसी सतही पानी के लिए हमारे पास 3 जो है दरियाई निकास, ड्रेनेज मीन्स निकास का क्या है, उसके लिए बेसन है, उसके लिए तास है। अगर मैं इसको समराइज करूं, ठीक है, इन इसको शॉर्ट करूं, इफ आई एम गोइंग टू मेक समरी ऑफ इट, तो कुछ इस तरह से होगा कि पाकिस्तान इज गिफ्टेड व्हाट, different resources, many resources of water. In these resources we have Himalaya and Karakoram. The water flows down from the peaks of Himalaya and Karakoram and then comes down to the fertile lands of Pakistan. Then further that water breaks into, mean divides or distributes into different what? Into different webs of canal system. And those canal irrigates about how much, 60 million hectare of land which is available in Pakistan. Apart from that, we have other resources of water including rainfall. We have also surface water which is there in the rivers,
and then we have underground water as well. Okay, then in surface water, we have three river drainage basins. We have three river drainage basins. In those basins, first of all, we have the Indus Basin River. The first basin, we have the Indus Basin River. The second, we have closed basin, Haran Desert. Then we have Makran Coastal Basin. So we have these three basins which are being what? Which are being made on surface water, which are related to surface water, because these are the basins which are related to what? The surface water. So these are three river drainage basins. I hope that you have understood. Now, after translation and explanation, let's discuss these words meaning. Lavish. Lavish means बहुत ज़्यादा, कसरत से. Resources means वसाइल. Resources means वसाइल. Gifted. Gifted means नवाजना, देना, अता करना, बख्शना. Then we have crystalline. Crystalline means साफ और शफाफ. Then we have glacial. Glacier is derived from the word glacier. Glacier is noun. Glacier क्या है? Noun है. Glacier is adjective. So बर्फानी तोदों का. Glacial means बर्फानी तोदों का नहीं, बर्फ का जो पानी होता है उसको क्या कहते हैं? Glacial. Then rolls down. Rolls down means नीचे बहना या बहना. Mighty. Mighty means अजीम, बड़ा. Mighty ताकतवर को भी कहते हैं. Mighty also means ताकतवर. Then we have peaks. Peaks means चोटियाँ. Peaks means चोटियाँ, पहाड़ों की जो चोटियाँ होती है उसको we call it peaks. Then we have fertile. Fertile means जरहेज. Fertile means जरहेज. अब इसका opposite क्या है fertile का? barren, बंजर. The opposite of fertile is barren, बंजर or infertile. Then we have plains. Plains means मैदान. एक होते पहाड़, एक होते plains, मैदान. So plains means मैदान. Intricate. Intricate means पेचीदा, difficult, intricate, पेचीदा. Then we have web. Web means जाल. Web means जाल. Then once again we have canal system. Canal system. Canal means nehri. Canal means nehri. Canal means neher basically. But here this canal has been used as an adjective, so we call it nehri nizam. Canal system means nehri nizam. Then we have irrigates. Irrigates means sairab karna. Sairab karna. The next word we have cultivable. Cultivable is kabili kasht. Cultivable means kabili kasht. Available. Available means dastiyab. Rainfall means barish. Rainfall means barish. Then we have the next word surface water. Surface water means sati pani. Then we have underground. Underground means there is zameen. Zameen ke andar. River drainage. River means daryai. Drainage means nikas. यानी पानी के निकास का जो सिस्टम उसको क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम. बेसन. बेसन बेसिकली छोटे तालाब को भी बेसन कहते हैं और इसको तास भी कहते हैं. तास. I hope that you have understood translation, words meaning and summary that we have done. Now we have to proceed further about the grammatical structures which have been used inside the text. Let's do it practically. First of all, let's take a start from adjective. There are many adjectives which have been used inside the text. So let's take a start from adjective. Now you see, first of all, we have, lavish. And we have also the word gifted. Now you see this gifted, gifted with. Now you see here it has been used as a verb, but gifted is also, it can also be used as an adjective. It can be, for example, we say gifted man. Gifted man means the person who has been gifted by God. So gifted can be used as an adjective. It is also past participle, third form of verb. So third form verb, when it is used as an adjective, we call it a past participle, and it can be used as an adjective.
The next word we have lavish. Now the word lavish tells us about resources. Resources is noun. Resources is a noun. And lavish tells us about, it modifies, it describes this word resources which is a noun. So हमें ये क्या lavish हमें resources noun के बारे में बता रहा है. तो lavish कोई भी लफ्ज, any word which tells us about noun, we call it a adjective. So this is adjective. Clear? I mean to say any word which tells us about noun, we call it adjective. So lavish is a adjective. Now we have the next word, where. Now see where. Where is a word which also refers to this land. It is a land, where. Now where is basically, we also sometimes we call it relative adverb. We call it relative because it makes a relationship between two clauses. But here you see it refers to a land. It refers to land. So here it relates a noun which has been discussed before. So where is working as a relative pronoun as well over here. It works as a relative pronoun as well. Though it is adverb, conjunctive adverb, but it also works as a relative pronoun. Clear? Now the next word we have crystalline. Crystalline. Now you see crystalline tells us about water. Crystalline tells us about water. Glacial also tells us about water. Crystalline means saaf shafaf pani. So saaf shafaf, the word crystalline tells us about noun water. Okay, so crystalline is an adjective. This is also an adjective. Now the next word we have glacial. As I told you earlier that glacial is derived from the word glacier. Glacier is noun. Glacier means barfani toda, and glacial barfani tode ka. Understand? So it becomes an adjective. This glacial also tells us about the noun water. So glacial is also adjective. Glacial is as in adjective. The next word we have mighty. Mighty. Mighty tells us about the word Himalaya and Karakoram. This Himalaya is also noun. Karakoram is also noun. So mighty tells us about two nouns at the same time. So it modified, it tells us about nouns which are two in number. So this is also adjective. Mighty is also an adjective. The next word we have fertile. The word fertile tells us about plains, and plains is noun. Plains is a noun. So fertile, just like mighty, just like crystalline, just like glacier, just like I mean to say other adjectives, it tells us about a noun. So fertile is also working as an adjective in this sentence. Fertile tells us about the noun plains, so fertile is also an adjective. Next word we have intricate. Intricate. Intricate tells us about web. Web is basically a noun. Web is a noun. So intricate, just like previous words, it also modifies, it also tells us about noun. So intricate is also an adjective. So this intricate is an adjective. The next word we have canal. Now you see canal is basically a noun. Remember, canal is a noun. For example, we have another example. For example, we say English teacher. English. For example, we have English. English is basically a noun. It is basically a noun. When we say English teacher, now you see this English modifies or tells us about the noun teacher. Now, when this English is used with another noun teacher and it modifies this noun teacher, so this English is working as an adjective over here then. अगर ये इंग्लिश बेसिकली नाउन है, अगर ये दूसरे नाउन के बारे में बता रहे, टीचर के बारे में बता रहे, तो ये नाउन जो है फिर एडजेक्टिव का काम करता है. तो यहाँ पे इन द सेम वे हमारे पास कैनाल इज बेसिकली अ नाउन, बट इट टेल्स अस अबाउट सिस्टम नाउन, another noun. It tells us about another noun. So this canal becomes what? It works as an adjective in this phrase. Canal system. This is basically a noun phrase. This is a noun phrase, and here this canal is working as a modifier. Means it is an adjective.
It is an adjective. It modifies, it tells us about this system which is noun. So